Hello everyone. So today in this video we are going to discuss the Haryana Civil Services paper that was held on 24th July 2022, right? So we'll be providing you in detailed discussion for the paper, right? The paper was quite, you can say, on the डिफ़िकल्ट मीडियम टू डिफ़िकल्ट साइड, ठीक है. तो पिछले एक महीने से वी हैव ऑल्सो बीन रनिंग टेस्ट सीरीज़ फॉर हेल्पिंग यू टू प्रिपेयर हरियाणा PCS एग्जामिनेशन. तो उस टेस्ट सीरीज़ में से भी देर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरलैप विद द एक्चुअल पेपर. सो जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, दे माइट हैव ऑल्सो बेनिफिटेड अ लॉट. I'm sure about that, right? Now let's just discuss each of the question of the paper one by one, right? So you will get the answer key and brief explanation also of all the questions of this examination of this paper, right? Now let's begin with the first question. The first question is that related to science and technology section. So इस बार majority of the question in this Haryana PCS paper are from science and tech, basic sciences or science and tech portion. अगर आपने एनालाइज किया, इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड द पेपर यू वुड हैव अंडरस्टूड, ठीक है. सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस एरिया एंड दे वर वेरी बेसिक, डायरेक्टली पिक्ड फ्रॉम NCERT मोर और लेस, ठीक है. तो अगर आपने बेसिक पढ़ाई की है, जैसे हम हमेशा एम्फसाइज करते हैं टू गो बैक टू द बेसिक्स, दैट इज़ योर NCERTs, तो द पेपर यू कुड हैव ईजीली क्रैक्ड द पेपर, राइट. सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज़ फ्रॉम द sciences field, you can say, right? Now let's see. So we have to choose a correct statement, right? So let's first see the fourth statement. The state of matter can be changed by changing its temperature only, right? You see, this statement is wrong. When you apply pressure can also change the state of a matter. For example, आप देखिए, we have gas, right? Let's suppose there is gas. When you apply pressure it can get liquefied, क्योंकि particles जो है पास में आ जाते हैं. Basic sciences आपने पढ़ी है तो you will understand that is the distribution of the particles in a matter, right? That is how you also obtain LPG or liquefied petroleum gas, right? So temperature is not the only way, pressure is also the way. So 4 is wrong. So आपके तीनों गलत रहते हैं एंड आंसर इज बी. अदर्स यू रीड, दे आर वेरी सिंपल पॉइंट्स, इजी टू अंडरस्टैंड एंड करेक्ट वंस, राइट. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड. अगर आपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज अपनी NCERT में पढ़ी हुई हैं तो इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन फॉर यू. तो सबसे पहले क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, राइट? इट्स अ मेथड, इट्स अ लेबॉर्ट्री मेथड जिससे हम किसी मटेरियल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, राइट? कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड, राइट, ठीक है. उसके बाद सब्लिमेशन, डायरेक्ट गैस टू सॉलिड, राइट, ठीक है, या सॉलिड टू गैस, यू कैन से डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्जन, राइट. सेंट्रीफ्यूगेशन, जो आप घर पे रोज़ प्रोसेसेस देखते हैं, ठीक है, जो बटर क्रीम बनती है, राइट, वो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट. सो आप देखिए, दिस इज़ वेरी इजी टू मैच बटर फ्रॉम क्रीम, सेंट्रीफ्यूगेशन. फोर्थ का आएगा 3, राइट. सब्लिमेशन, सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड टू गैस, राइट. सो यू कैन से camphor from sodium chloride, right? So 1 will be mashed with 4, and then you have different pigments getting separated. They are done through chromatography. So second ka we have 1, right? So and third will go with distillation, right? So the answer for this question will be C, right? It's easy to understand. ये मधानी वाला सिस्टम आपने घर पे बहुत लोगों ने सुना होगा, हरियाणा से हैं जो स्पेशली, मधानी तो हमने देखी ही है, राइट. सो आप इजीली उसके थ्रू ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे,
right? The next question is related to your polity section. So this is quite difficult. ऐसे cases हमने कभी सुने नहीं हैं ना कभी पढ़े हैं, so it's difficult to attempt. जिसको थोड़ा बहुत idea था they could have solved it, otherwise it's difficult to do. But the answer for third question is B, right? So the answer for this is B. That means A is related to delegated legislation, as I told you. Keshav Singh case is related to legislative privileges. 2001 case is related to Gujarat gas, and 2002 case is related to Gujarat assembly elections, right? So just a factual question, right? Now the next question again related to polity segment. So the question says, which of the following UTs are included in the इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में कौन सी यूटीज़ का पार्टिसिपेशन होता है. सो वी ऑल नो दैट ओनली 2 UTs हैव सच प्रिविलेज, एंड दोज UTs आर Delhi and Puducherry. So the answer would be A and C, right? Yes, so the answer here would be C, A and C, Delhi and Puducherry, right? Now fifth question, again related to polity. See, polity is very scoring. अगर आप polity में basic books पढ़ के जाते हैं, then polity is also very scoring. सीधा public account committee बहुत ही important committee है, उस पर question आया हुआ है, right? So they are talking about the membership of the committee. So इन्होंने कहा है it does not has more than 10 members from Lok Sabha and not more than 7 from राज्य सभा. ठीक है, this is wrong. Total members होते हैं इसके 22, 15 from Lok Sabha and 7 from राज्य सभा, right? So basic composition ही गलत है. So you could have easily done the question. All other options are correct. So answer will be D. Answer will be D, right? Now sixth question again on polity, about the ad hoc judges of the Supreme Court, about the ad hoc judges of the Supreme Court, right? So see, ad hoc are appointed, right, to fulfill the quorum, right? जब मिनिमम स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की नहीं पूरी होती है, डॉग जजेस अपॉइंट करने पड़ते हैं. स्टेटमेंट इज राइट. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट्स अदर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स टू अपॉइंट डॉग जजेस, ठीक है, क्योंकि वहाँ से उनके हाई कोर्ट्स में से पिकअप करने होते हैं, राइट? नाउ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ad hoc judge, prior consent of the president is not mandatory. This is wrong. President's consent is very much required to appoint any kind of judge, even including the ad hoc judge, right? So this C option is wrong. So the answer will be D, because this option is also right, because the ad hoc judges also have similar privileges and powers as the common or the normal judges of the court, right? Now seventh question, again on science and technology part. It asks which vitamin functions both as the hormone and visual pigment, राइट? अगर आपको ये कुछ क्वेश्चन नहीं भी आता है, सो वी ऑल नो दैट विजुअल पिगमेंट विल बी रिलेटेड टू विटामिन ए. विटामिन ए ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिनॉल, राइट? सो इनमें से यू सी द आंसर विल बी डी, राइट? सो आंसर विल बी डी, सेवेंथ का. एट्थ क्वेश्चन, total percentage of carbon present in human body, right? See, human body is composed of various elements, oxygen being the largest. Almost 65% of human body is composed of oxygen. In the similar fashion, carbon forms 18.5%, right?
and hydrogen 9.5% and so on, right? So आपको कार्बन की परसेंटेज चूज करनी थी. You can write 18 to 19%, that is A, right? बेसिक साइंसेस के बेसिक क्वेश्चंस हैं. आप कोई भी साइंस की एनसीईआरटी उठा के देख लो, you will get the answers, right? Now, ninth question. The answer to ninth question is C. Right? Air moves, during expiration. The air will leave the lungs when the pressure inside the lungs must become higher than the atmospheric pressure. ठीक है? Higher than the atmospheric pressure, because air always moves from high pressure to low pressure area. ठीक है? So अगर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हाई प्रेशर हमारे लंग्स में होगा तो लंग्स से आउटसाइड द एयर विल मूव, राइट? सो आंसर विल बी सी, राइट? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन it asks you which of the following given below are the greenhouse gases, right? So आप एक एक करके देख सकते हैं. water vapors are the largest greenhouse gases, right? So obviously methane is also a greenhouse gas. Nitrous oxide is also a greenhouse gas. Sulfur के oxides भी greenhouse gas होते हैं, right? So many are there except nitrogen, right? So the answer to this question will be A. The answer to this question will be A. Very basic question. Then the Padma awards are given in various disciplines. तो इस question में you had to match the personality with the trade or the field to which they are related. To the trade or field to which they are related, right? So the answer will be A, because Prabha Atre is related to the field of art, right? Radheshyam Khemka, he is related to literature. Then Natarajan Chandrasekharan, he is related to trade and industry. Devendra Janjheria, he is related to sports. And Sanjay Rajaman, he is related to science and engineering, right? So answer will be A. Factual question. If you have read any of these names in the news, you could have eliminated and solved the question, right? Then 12th question. Again, this question lists the various prominent personalities on one side and the titles that have been awarded to these personalities, right? So the answer to this question, 12th question, is B, right? Now, the next question is from history, talks about Tatya Tope. His actual name is this, Ramchandra Pandurang Rao. Very right, right? He came in contact with Nana Sahib and Tambe, that is also true, right? He belonged to Yola in Maharashtra, true. And then he led rebellion, sorry, not Napoleon, rebellion in Madhya Pradesh and Rajasthan. That is wrong, because he was majorly related to areas of Kanpur and all. So you may say Uttar Pradesh as the state. So the answer will be A, right? Answer will be A. Next question related to scheme. Question related to scheme, that is the National Technical Textiles Mission. National Technical Textiles Mission. So this scheme was very much in news. You must have read about it. It's very easy. Not as such easy. If you have read the facts exactly, then you could have done it. Technical textile products are divided into 14 categories. This is wrong. It's divided into 12, not 14 categories, right? Then penetration level of technical textiles. Rest of the three options are correctly
given about the scheme, right? Only this fact is not correct, so the answer will be B, right? Now, fifteenth question, which gives us a statement about manganese, right? So it says that manganese is an important raw material for smelting iron ore. Very true, right? It's used there for manufacturing ferroalloys also, right? Now, manganese deposits are found in almost all geological formations. However, it is mainly associated with Dharwad system. Okay? These are basic rock systems. You might have studied about them. So both these statements are correct, but this is not the explanation. The answer would be D. Right? This does not explain this statement, but both statements are individually true. Right? So the answer will be D. Now, again a very easy question from your geography NCERT. Which of the following statements are correct about Eastern and Western Ghats? Right? We all know about Western Ghats. We all know about Eastern Ghats. Right? This is how we will see them. Now, Anaimuri is the highest peak in the Eastern Ghats. This is wrong. It would be Western Ghats. Right? Then, Western Ghats are comparatively lower in elevation and less continuous than Eastern Ghats. So, the lower in elevation, that is wrong. Not lower in elevation, right? So, this is also wrong. Second is wrong. Most of the peninsular rivers have their origin in Western Ghats. They originate from this place. Majority of the peninsular rivers, Godavari, Kaveri, Narmada, there are many other such rivers that originate from Western Ghats. So this is right, and they meet each other at yes. So the answer would be B. The answer would be B. Right? Now, 17. Which of the following statements are correct about a disaster which struck Uttarakhand's Chamoli district? Right? So this is a question based on current affairs. Right? So the first option is incorrect. The portion of the, this is not Gangotri glacier. This is not Gangotri glacier. This is Nanda Devi glacier. This is Nanda Devi glacier. So the answer will be C. All the other two options are right. Right. Now, 18th question. 18th question. So the question asks you about Kareva Formations. Very important, mentioned in geography NCERT again. Right. So this is present in Kashmir, not Sikkim Himalayas. So this is wrong. Right? Now, Karevas are thick deposits of glacial K and they are embedded with moraines. This is right. Right? So 1 is incorrect, 2 is right. Answer would be B. Answer would be B. Right? Now, 19th question. Which of the following statements are correct about waves? We have to decide about waves. So, wind causes waves to travel in the ocean. Yes, wind is responsible for, pushing the waves in the oceans. The actual motion beneath the wave is not circular. This is wrong. It's a circular only. जब आप डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ते हैं, you get to know that particles move in circular motion beneath a wave, right? Then steep waves are not fairly young ones and are probably formed by local wind. This is not true. These are formed by the gravitational pull forces of moon, right? So this is also wrong. And the highest and lowest point of a wave, matlab, this is the highest point, it is called crest. This is the lowest point, called as the trough, right? ऐसे आप बना सकते हैं, waves flow करती हैं, highest point को crest कहते हैं, lowest point को trough. So 4 is right. Answer would be 1 and 4. That is D. That is D. Right? Now, 20th question.
Again, factual question, Koppen scheme, if you know it, it's easy to do, right? So the answer for this will be C. The answer for this will be C. It's also from Geography NCERT, right? Now the next question is on art and culture part. Art and culture part, right? The question asks you to match these paintings with the region to which they belong, right? So Fad belongs to Rajasthan, Sura paintings belong to Odisha, right? Mata Ni Pachedi belongs to Gujarat, and Sanji belongs to Uttar Pradesh, right? So the answer will be A. Answer to this question will be A, right? The next is we have to match the textile, right, with the variety of the work that is done on that textile, right? So this is basically a little difficult type of question. In the detail mein knowing about each of these terms is very difficult, but the answer to this question is A. Answer to this question is A, right? Then again a question on history, easy question. If you have read the basics, even if you have read the basics of ancient medieval, you can solve this question. Okay, so you have to chronologically arrange these events which have been mentioned in this question, right? So देखिए, so we all know that, सी आपको यहाँ ईयर जानने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चीज़ एग्जैक्ट नोन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इसमें. यू जस्ट सी पालास, प्रतिहारास, पल्लवास एंड चोलास, राइट? अगर आपको इन एम्पायर्स की क्रोनोलॉजी याद है देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? सो सबसे पहले इनमें से आए थे पल्लवास, देन पालास, Pratiharas, and finally Cholas. Cholas is one of the last empire to come, right? So the answer to this question will be C. 2, 3, 1, 4, right? The answer will be C. ठीक है? Again a chronology based question. So this is modern India. Here you should know the year also because this is very useful. Modern India पे कुछ भी question आए, you should not be wrong and you should know some facts also to write answers in your mains, right? Rowlatt Act 1990s. I mean 1919. Dandi March 1930 we know. Second Round Table Conference 1931 and death of Jatin Das 1929. So the answer to this question will be B. Rowlatt Act, Dandi March, Second Round Table Conference, death of Jatin Das, Dandi March and Round Table Conferences. ठीक है? राउंड, अगर आपको ईयर भी नहीं याद तो इतना बेसिक फैक्ट यू माइट बी नोइंग कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं डांडी मार्च के बाद शुरू हुई थी, सेकेंड और थर्ड. ठीक है? सो उससे भी आप एटलीस्ट, और राउलेट एक्ट का ईयर तो सबको ही याद होता है, इन तीन ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. बाली किसको कहा जाता है? इट्स अ नेम ऑफ द tax. In the later Vedic period, Bali was considered a tax, so B will be the answer, right? Then Ashtapada. This used to be a game, a square game, a game of chess, right? So the answer will be C, right? Next question again on science and technology part. The question is on yeast. ठीक है? यीस्ट पे क्वेश्चन है. यीस्ट इज अ फंगाई, दैट इज राइट.
can form pseudomycin, right? That is right. Pseudo means nakli, layer, outer layer. It uses budding to reproduce. We have read it in अपनी छोटी classes में भी we have read it, right? Budding use होती है, right? So this form is used. Then anaerobes होते हैं yeast, that we know. All yeast are pathogenic, that is wrong, right? So the answer will be A, right? All yeast are dimorphic, this is also wrong, right? The answer will be A to 27th question. Now 28th, again question based on schemes, you can say, right? National Dairy Research Institute, right? So all the statements that are mentioned in the question are correct. The answer will be D. The answer will be D, right? Then the question 29th question on हरियाणा. हरियाणा का एग्ज़ाम है तो हरियाणा पे क्वेश्चंस आना बहुत लाजमी था, एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ वेरी much expected question, right? So all these are right. Bir Shikhargarh, this is wrong because this is in Panchkula district. Panchkula district. 4 is wrong, answer would be A. Answer to the 29th question will be A, right? Next, 30th question, again based on schemes, right? So the FAME mission is related to e-vehicles, ठीक है? Nishta related to, teachers and school heads for their development and progress, right? Pradhan Mantri Saubhagya Yojana to ensure access to electricity to all the people, especially poor and deprived. So this is also right. This is also right. And the Pahal scheme is focused on the development of northeast areas. So this scheme is also right. The answer to this question will be D. The answer to this question will be D. Now, the next question, you can say it's from current affairs or economy section. India Post Payment Bank. India Post Payment Bank, right? So all the statements to this question are correct except statement 1. Except statement 1, because it was not set up in 2016, rather in 2018. It was set up in 2018, right? So the answer will be B. Rest of the, options are correct, right? Then, which the question asks us to see the incorrect, choose the incorrect options, right? So Central Board of Film and Certification is a statutory body regulating the public exhibition of films. That is correct. तो मतलब 1 तो आंसर में नहीं आएगा, ठीक है? Then the film Raja Harishchandra, produced by Dada Saib Phalke, was released after passing Indian Cinematography Act. No, this is wrong because this was released in 1913 itself, right? So 2 is wrong, 2 answer में आएगा, मतलब the answer to this question will be B, right? This is also wrong because this is related to checking corruption in this field, this industry. So this is related to corruption, checking corruption, and not to the process that has been mentioned in the statement, right? Answer will be B. Now 33 question asks you about Indira Gandhi National Center for Arts. Indira Gandhi National Center for Arts. It's an autonomous trust set up by government under Ministry of Culture. That is true. It provides postgraduate diploma courses. True. It has to prepare national register. That is wrong because this register is prepared by
the Archaeological Survey of India. Heritage का register that is prepared by the Archaeological Survey of India. So this option is wrong. The answer to this question will be D. The answer to this question will be D. Right? Now, again a very easy question from your science portion. जो process, it asks you about photosynthesis, right? It asks you about photosynthesis. So photosynthesis is a process that helps green plants synthesize their food. Choose an event that does not take place. That does not take place during photosynthesis, right? So देखिए, absorption of light energy by chlorophyll, यही basically photosynthesis है, right? Then reduction of carbon dioxide to carbohydrate, this will provide food to the plant, right? And splitting of water is involved. C is not what happens in photosynthesis, right? So C will be the answer. ठीक है जी. Next, again, if you know the basics of blood groups, you can do this question. The man has blood group A. ठीक है, कैसे man का blood group A हो सकता है? With AA or AO possibilities, right? Women has blood group B. That means BB is possible and BO is possible, right? So child का blood group क्या होगा? Right, so see, the possibility is AB, the possibility is AO, right? The possibility is BO, the possibility is also O, right? So blood group हो सकता है AB, A, B or O. So the answer will be 2 only, B, right? If you understand the basic logic of this question, then this is very easy. अगर आपने ये कभी पढ़ा ही नहीं है, then it's difficult to solve this question, right? And we in our classes provide you all these basics, especially in science and technology, geography, economy, right? So these are very easy questions for the students who have studied with us, right? Now, the next question is related to nitrification, denitrification processes. So nitrification is a process, the statement says, in which nitrates are converted to nitrogen, right? This is wrong because nitrification में ammonia is getting converted to nitrites, which get later converted to nitrates, right? That is what basically nitrification is. ठीक है? And denitrification, again, where nitrate and nitrites are converted to gaseous form of nitrogen, right? So the answer to this question will be 1 is wrong, right? 2 is also wrong. The answer will be C. We have to choose the correct statements, right? We have to choose the correct statements. Next, 37th question about lichens. Again, a very easy question. Lichen होता क्या है? If you just know what is a lichen, then you can solve this question. Lichen is basically a symbiotic relationship between whom? Algae and fungi, right? So अब ये symbiotic relationship क्या होता है? That both are benefiting from each other. Now fungi cannot produce its own food. That is why it depends on algae for the food. That is why it's living in this symbiotic relationship. ठीक है, इसी फैक्ट से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. Lichens are algae, you can't say that.
Lichens are autotrophs, yes, खुद का खाना खुद बनाते हैं. Lichens are fungi, no. Lichens are symbiotic life forms, yes, symbiotic relationship में. Lichens are saprotrophs, no, they are not saprotrophs. So the answer will be 2 and 4 are correct. That means the answer will be 2 and 4 are correct. The answer will be B. 2 and 4 are correct. See, lichens are autotrophs and lichens are symbiotic life forms, right? B. (38) question about physical and chemical change. Again a easy question. Physical change matlab temporary change in which the physical state, physical characteristics of the compound or the material in question changes. ठीक है, उसकी size shape change हो जाएगी. ठीक है, उधर से chemical change, they are permanent irreversible changes. ठीक है, permanent irreversible changes जिनमें chemical composition में फ़र्क आता है, right? So the right answer to this question will be D, right? Now, which of the following statements are not correct? We have to choose the incorrect statements. Plaster of Paris is obtained on heating gypsum. This is correct. Sodium carbonate is an important constituent of baking soda. This is baking powder, sorry, that is wrong, because sodium carbonate is found in washing powder. And baking powder has sodium bicarbonate. Right? Now, bleaching powder can also act as an oxidizing agent, correct? Blue vitriol has 10 molecules. Blue vitriol क्या होता है? Copper sulfate, ये formula है. So it does not has 10 water molecules, it has 5 water molecules, right? So this is wrong. Sodium hydroxide, this is right. So the incorrect options are D and B. B and D. The answer will be C to 39th question. C. Right? Now 40th. The 40th question asks you about the action of soap. बहुत पढ़ा है ये बचपन में. Again they are asking. Let me just tell you the basics. Hydrophobic, जो पानी से दूर भागेंगे. Hydrophilic, जो पानी के particles के साथ they'll stick. Right? So now hydrophilic end of soap molecule interacts with oily droplets. No, they will interact with water side, right? So A will be incorrect. Okay, the formation of micelles in a soap solution during the cleaning of clothes is called emulsification, right? This is also wrong. Right, the hydrophobic end of the soap molecules is the inner side during micelle formation, correct? Then micelles surround the Ca2 plus or magnesium ions in hard water instead of oily water droplets. This is wrong. The answer will be C. The answer to this question will be C. Right. The next question is on laterite soil. Laterite soil, very easy again, found in high temperature and high rainfall areas. यहाँ low लिखा है, this is wrong. High rainfall areas, right? Because they are found in very high rainfall areas, so क्या होता है? The minerals or whatever content is there, they get leached. Only ferrous and aluminum
components remain on the soil, rest everything is leached, so they cannot, laterite soil cannot be rich in this, क्योंकि ये सब ज़मीन में चले जाएंगे, soil में नहीं रहेंगे. So this is also wrong. They are widely cut as bricks, this is right. They are developed in peninsular plateau, this is also correct. So the answer will be 3 and 4, that is B. That is B, right? Easy question. Again a very easy question from environment section, right? So we all know POPs are related to Stockholm Convention. Minamata Convention held in Japan was related to mercury, right? Rotterdam Convention is related to hazardous chemicals, and Basel Convention is related to transportation of hazardous waste. जितना भी खतरनाक waste जो होता है कि you can say chemical waste, उसको regulate करने के लिए Basel Convention is used. Mercury की regulation के लिए Minamata, and POPs persistent organic pollutants के लिए Stockholm, right? So the answer to 42nd question will be B, right? Then languages, ठीक है. See, although this question appears to be very difficult, but अगर आप सिर्फ ये option देख ले, द्रविडियन language कहाँ होगी? Obviously Southern India का options यहाँ पे कौन सा है? 1, right? B will be 1, and from these options only A has B as 1, बाकी सब गलत होंगे, right? Although the question appears very difficult, but the hint to the answer lies within the question itself. ठीक है, सब कुछ किसी को भी नहीं आता होता है पेपर में. With your intelligence, with your limited knowledge only, you solve all the questions, right? Then leading producers, again to some extent it's a factual question, बट आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हैं इसमें. ज्वार इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी B. ठीक है, राइस देखिए ऐसी जगह पे होगा जहाँ वाटर बहुत अवेलेबल होना चाहिए. अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एटलीस्ट यू नो दैट राइस इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, इट विल बी फाइंड इन द स्टेट वेयर वाटर इज़ अबंडेंट. सो राजस्थान तो नहीं हो सकता, राइट? सो C with 3 दिस ऑप्शन यू कुड हैव एलिमिनेटेड, राइट? उसके बाद देखिए ज्वार जो है दैट रिक्वायर्स वेरी लिटिल रेनफॉल, सो वो इन सब एरियाज़ में पाया जाएगा. नॉट इन वेस्ट बंगाल बिकॉज वेस्ट बंगाल हैज़ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड रिवर्स. ठीक है, सो इस तरीके से आप थोड़ी बहुत एलिमिनेशन में इसे यूज़ कर सकते थे. आंसर विल फाइनली बी योर B, राइट? उसके बाद पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट्स को अरेंज करना था. यूपी लीड्स एवरीवेयर, वी नो दैट, राइट? और यूपी के पीछे पीछे ही भागता आ रहा है महाराष्ट्र, अ वेरी बिग स्टेट हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया. Why? Because of lot of migration. महाराष्ट्र में इतनी opportunities होती हैं, people go there for work opportunities, for better life opportunities. So Maharashtra is also one of the most populous states, then Bihar and then West Bengal. Answer will be D to this question. Right? उसके बाद national parks, very important. Any civil services exams you pick up, there will be at least one question appearing from the national parks, right? So इनको भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है. तो बलपक्कम is present in Meghalaya. Balpakkam is present in Meghalaya, right? A is with 3, right? Then Mahavir Harina Vansthali, that is present in Telangana, right? Namdampa is present in Arunachal Pradesh and Nameri in Assam, right?
So the answer to this question will be B. नामेरी, औरंग, ऐसे बहुत सारे हैं जो असम में प्रेजेंट हैं. सो आपको मेजर स्टेट्स के तो पता ही होने चाहिए. मेघालय का नोकरेक, बलपक्कम, राइट. सो ऐसा टाइप्स मेन जो नेशनल पार्क्स है वो आप याद कर लीजिए, सो दैट एलिमिनेशन वगैरह में आप उस नॉलेज को यूज़ कर सकें, राइट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, राइट. Now the next question, Chandrayaan, most expected question. Chandrayaan 2, although difficult है, इतने facts डाले हुए हैं, किसी को exact date वगैरह नहीं याद रहती है, but चलिए. So this statement is correct, all the facts are correct. इसमें ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था, रोवर भी था. पोस्टपोन होने के बाद जुलाई 22, 2019 को फाइनली ये लॉन्च किया गया था, राइट. एंड पोलर ऑर्बिट में गया था एट द हाइट ऑफ 100 किलोमीटर. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए, राइट. नाउ 48th क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव. विच इज़ नॉट अ प्रिजर्वेटिव, फूड्स के लिए यूज़ होता है प्रिजर्व करने के लिए. सो ऑल दीज 3 आर प्रिजर्वेटिव्स. दिस इज़ नॉट, बिकॉज दिस इज़ अ आर्टिफिशियल स्वीटनर. Artificial sweetener, right. So answer will be A, right. 49th question, related to biogas and natural gas, right. Both are forms of methane only. It contains large amount of methane and can be used as a fuel, right. It releases no smoke or residue, right. It is good and safe source of energy, right. Biogas also contains carbon dioxide, and higher content of carbon dioxide contributes to low energy. That is true. Both these statements are correct, but we can't say that R explains A, right. R does not explain A. So the answer to this question will be B, right. Now 50th question, 5-year प्लान आने से पहले इंडिया में कैसे प्लान्स, कौन से प्लान्स इमर्ज हुए थे, राइट. सो यू माइट हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट. सर्वोदया प्लान was given, Bombay plan was given. The answer to this will be 2 and 4, right. There was nothing like this, so the answer will be 2 and 4, C, right. Now again science based question, microwave oven and television uses DC current. That is wrong, right. Then refrigerator and washing machine uses AC current. That is right, right. Air cooler and air conditioners use AC current. That is wrong. Most of the devices use 22 ampere current, 220 sorry amperes of current, right. Just give me a minute. So air coolers and air conditioners uses AC current. This is also right. Most of the devices use 220 ampere current. That is wrong. Magnitude of current passing through different devices is same. ये कैसे हो सकता है? Obviously this is wrong. The answer will be B. The answer will be B, right. So the magnetic field lines, very basic question. आपने सबने ये डायग्राम तो बचपन में देखा ही होगा. Right. If you have seen this diagram, you can easily answer this question. Emerges, the magnetic fields emerges from North Pole and they emerge at South Pole, correct. The direction of magnetic field is taken to be the direction of north, right. ये north direction बन जाएगी आपकी,
ठीक है. देयर इज नो फील्ड इनसाइड द बार मैग्नेट, यहाँ पे कोई फील्ड नहीं होता है. दैट इज करेक्ट. द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस. जितनी ज़्यादा ये क्लोज होगी मतलब उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है. राइट. So this statement is also correct. All these statements are correct. Answer will be A. Answer will be A. Now, again an easy question like that. अगर मैग्नेट वाला आता है तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. दैट इज़ करेक्ट. दोनों में डिफरेंस होता है, यही हमने बचपन में पढ़ा हुआ है. इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी, गोल गोल घूम के हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. दिस इज राइट टू. बोथ वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल? नो, बोथ वर्क ऑन ऑपोजिट प्रिंसिपल्स. सो द आंसर विल बी 1 and 2, दैट इज सी. द आंसर विल बी 1 and 2, दैट इज सी. राइट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन but important topic and important question. So what have been the India's you can say commitments at COP26 held at Glasgow? Very important summit, can be repeated in any n number of papers. So इसको डिटेल में आप याद रखिए. राइट. सो इसमें reach, this is wrong. India is committed to reach 500 gigawatt of non-fossil energy capacity by 2030. Right. This is correct. This is correct. This is correct. Achieving the target of net zero by 2070. This is wrong. ये ईयर तो बहुत याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस स्टेटमेंट को आप अपने आंसर्स में बहुत यूज़ कर सकते हैं. राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द आंसर विल बी B. Answer will be B. Right. Then exports. सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स देखिए राइस के तो नहीं होते हैं. राइस तो जितना हम उगाते हैं खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं हम राइस तो टॉप में नहीं होगा. सो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज़ इंडिया में से जो हैं वो हैं इंजीनियरिंग गुड्स, देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड देन जेम्स एंड ज्वेलरी. राइट. सो द आंसर विल बी सी. राइस तो आप जस्ट जज कर सकते हैं बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन. राइट. सो इंडिया नीड्स टू फीड, और हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी राइस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू एक्सपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस. सो इस लॉजिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. राइस एलिमिनेट कर देते तो आंसर सी आ जाता आपके पास. राइट. अगेन 56 स्कीम बेस्ड क्वेश्चन. जिसने स्कीम पढ़ी है इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम और हर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम. ठीक है. इट इज़ अ 6 months प्रोग्राम. दिस इज़ अ रॉन्ग. दिस इज़ अ 1 year प्रोग्राम. अप्रेंटिस आर इम्पार्टेड ट्रेनिंग एट द वर्क प्लेस. ठीक है. अप्रेंटिसशिप का मतलब ही ये होता है कि आपको इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में काम करना है वहाँ जाके आपको काम सिखाया जाएगा. ठीक है. और उसके लिए आपको सैलरी भी मिलती है. कुछ मिनिमम एग्जैक्ट वर्कर वाली सैलरी नहीं मिलेगी बट कुछ ना कुछ पेमेंट ज़रूर मिलती है. सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. द आंसर विल बी 2 only. B. 2 only. राइट. Which of the following are true? GDP MP मतलब market price. GDP at market price is the market value of all the goods produced within the country. Right. Within the geographical boundary. ठीक है. geographical boundary ये याद रखना है. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है. ठीक है. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं है. ठीक है. सो दिस इज राइट. If the GDP of a country is rising, the welfare may not rise as a consequence. ठीक है. This is also true. इसकी एग्जाम्पल क्या है? Jobless growth, or you can say growth, GDP growth, but with huge inequality also rising. तो क्या होता है कि कंट्री ग्रो कर रही है बिकॉज देर आर ओनली फ्यू पीपल इन द कंट्री दैट आर ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस. अमीर लोग अमीर होते जाते हैं बट गरीबों की हालत इम्प्रूव नहीं हो पा रही. सो दिस सिचुएशन इज़ वेरी मच पॉसिबल. ठीक है.
देन जीडीपी डिफ्लेटर, अगर जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला पता है आपको, सो इजीली आप सॉल्व कर सकते थे. नॉमिनल बाय रियल इज इक्वल टू योर जीडीपी डिफ्लेटर. सो द आंसर विल बी ए. फोर्थ ऑप्शन गलत है. ठीक है जी. देन अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. तो ब्राज़ील में हुआ था, पढ़ा ही होगा आपने. इंडिया वॉन 16 मेडल्स, राइट. करेक्ट ही पूछा है, इनकरेक्ट पूछे गए हैं, राइट. एंड सुमित दे वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर रेसलिंग. ये देखिए हेल्ड फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज रॉन्ग. मई के महीने में हुआ था, अप्रैल के महीने में नहीं. सो द आंसर विल बी बी, राइट. नाउ एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्टेट्स के मैट्रिक्स में से आपको बताना है कौन कौन सी स्टेट्स करेक्ट ज्वाइन की गई हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट एक्सेप्ट दिस. गोवा इज नॉट पेयर्ड विद कर्नाटका, गोवा इज देयर विद झारखंड under this program, right. So the answer will be C. The answer will be C. Then question on Ramsar sites. ये तो important है ही है. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, these are important questions. किसी भी सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पेपर में आना ही लाजमी ही है एक ना एक क्वेश्चन. तो यहाँ तो 3 आप देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट. सो रुद्रसागर लेक प्रेजेंट इन त्रिपुरा, सोकर लद्दाख में है, षष्टम कोटा केरला में है, नवाबगंज यूपी, विंध्यवास हरियाणा. जो हरियाणा के हैं उनको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए था, बाकी नहीं तो, राइट. सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन. इफ यू हैव मेड सम एफर्ट बिफोर द एग्जाम, आंसर विल बी ए. आंसर विल बी ए. थोड़ी बहुत साइट्स भी आपने लर्न की होती तो this was an easy question for you to solve, right. Now next question, right. The answer to this question easy question है आपका direct sciences से basic. The answer will be C. The answer will be C. It's a technique for diagnostics, ठीक है. इकोकार्डियोग्राफी, बहुत बार अगर आपने कोविड के टाइम पे लोगों का सुना होगा, दिस टेक्निक वॉज बीइंग यूज्ड टू टेस्ट देयर हेल्थ इन सम एरियाज, राइट. एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देन अगेन बहुत ही ईजी, हाइपरमेट्रोपिया, मेओपिया, राइट. उस पे बेसिक क्वेश्चन आया है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, राइट. सीधा आपको ये पता होना चाहिए हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, राइट. कौन से लेंसेज यूज होते हैं दोनों में, राइट. द क्वेश्चन इज इजी टू सॉल्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provisions require ratification from not less than 1/2 of the states. ठीक है, जहाँ states का भी consent चाहिए, right. So you see such provisions are related to president, schedule 7, constitution में amendment process में अगर कोई change चाहिए वहाँ आपको state का states का consent चाहिए, right. So ऐसी चीज़ों में स्टेट्स की अग्रीमेंट के बिना सेंटर जो है चेंज नहीं कर सकता, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स. सो इसको हमने इसकी जो प्रोविजंस मेंशन्ड है बुक में वो हमने याद की हुई हैं. तो क्या क्या आंसर आ जाएगा. एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, राइट. आर्टिकल 54, 55, 73. इफ यू रिमेंबर दिस इज रिलेटेड टू प्रेजिडेंट. प्रेजिडेंट इज अ हेड ऑफ द स्टेट. तो उसमें सेंटर गवर्नमेंट ही नहीं स्टेट्स का भी रोल होता है अपॉइंटमेंट में. सो इसीलिए स्टेट्स के पूछे बिना हम प्रेसिडेंट के ऑफिस में चेंजेस नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल्सो देयर. चैप्टर 7, दिस इज नॉट राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट शेड्यूल 7, नॉट चैप्टर 7. एंड सिमिलरली चैप्टर 1 of part 9, that is also not included here, right. So the answer to this question will be A, right. A. Now
Which of the following article bars the courts for interfering in the disputes? पुरानी प्रिंसली स्टेट के टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटीज वगैरह हुई हैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट. ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? इट्स रिटन इन आर्टिकल 363. द आंसर विल बी बी. राइट नाउ बहुत ही फैक्चुअल से क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी पे. दीज आर लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन. एग्जैक्ट आंसर जानना मुश्किल है, बस आप थोड़ा एलिमिनेशन से कर सकते थे. दिस कैन नॉट बी द आंसर. राइट, उसके बाद इट्स डिफिकल्ट टू पिक अप फॉर यू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी in which part and chapter was right to property inserted after being removed from part 3? Initially ये fundamental right होता था, that means part 3 का part था, but it was removed as a fundamental right and provided as a constitutional right, right to property under part 12 sorry, part 12 chapter 4 में अब ये present है हमारे लोगों के लिए. Right? Then IR कोहिलियो केस, it's related to basic structure कि जुडिशरी की पावर है to see to any amendments that are made to constitution that should not affect the basic structure. ये जुडिशरी ने इस केस में कहा था. So the answer will be B. बहुत ही important केस है, यूपीएससी के मेंस में भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी 2017-18 के अराउंड. So ये केस तो आप डिटेल में पढ़ लीजिए, राइट, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है. देन अगेन साइंस का क्वेश्चन आ गया, वेरी बेसिक क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है. सेल ऑर्गेनालिज को उसके फंक्शन से मैच करना है. डाइजेशन कहाँ होती है? लाइजोसोम, जिसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है. राइट, राइबोसोम्स रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस. राइट, रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस. एंड देन योर गोल्जी बॉडी, they are related to lysosomes, formation of lysosomes, and endoplasmic reticulum, lipid synthesis. Right, so the answer to 67th question will be C. Right, now which of the following are genetic diseases? इनमें से चूज करना है कि genetic diseases क्या है. Right, it's clear, AIDS, hepatitis B, both are viral diseases. वायरस से होती हैं, एड्स भी वायरस डिसीज़ है एंड हेपेटाइटिस बी भी. सो मतलब ये नहीं आंसर हो सकता, एड्स नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. दिस इज लेफ्ट. 23rd क्रोमोसोम से रिलेटेड है. ऐसी चीज़ें आप कैसे भी इसको कर सकते हैं. आंसर विल बी डी. 268 क्वेश्चन. राइट, ईजी है अगर ये लॉजिक आप यूज़ कर लेते. सो इट इज़ ईजी इवन इफ़ यू डू नॉट नो एनीथिंग एल्स. ये तो हमें पता ही है. वायरल डिसीजेस कौन सी हैं वो वी ऑल नो. एड्स के बारे में वी ऑल नो, हेपेटाइटिस के बारे में वी ऑल नो. बी स्पेसिफिकली. राइट, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन. राइट, सो you have to match these terms with the respective explanation. So सबसे easy इसमें से है तोलका पीएम, because हमने संगम लिटरेचर बहुत पढ़ी है and there we have read that तोलका पीएम is related to Tamil grammar. Right, so B का answer will be 4. B will get related to your 4th option. Right, then Arikamedu, that were the Roman factories that used to be present. Right, Tolkappiyam is related to Tamil grammar. Valals used to be the patrons earlier, and Ma and Veli are measures of land. So the answer will be A. The answer will be A. ठीक है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पढ़ते ही मुंह में पानी आ गया होगा. राइट, जिन्होंने पेपर दिया है दे विल अंडरस्टैंड. राइट, सो इट आस्क्स अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ मैंगोज प्रेजेंट इन इंडिया एंड वेयर दे आर फाउंड. चौसा मैंगो, जिसे मैंगो का राजा भी कहा जाता है, ये वेस्ट बंगाल में नहीं पाया जाता है. राइट, ये पाया जाता है आपके यूपी में. राइट, फिर तोतापुरी आम. तोतापुरी आम ये भी मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, ये सदर्न साइड पे पाया जाता है, मेजरली बेंगलुरु एंड ऑल अदर एरियाज. देन एल्फांजो इन महाराष्ट्र, केसर इन गुजरात. दीज आर करेक्ट. द आंसर विल बी डी. राइट,
करेक्टली मैच फाइंड करना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन, चोला आर्किटेक्चर पे। Rajendra I of Cholas introduced Malay Galai coal, a standardized measuring unit. That is right. Rajendra I Chola's son built Brideshwara temple. बहुत ही important temple है. Do read about it in detail. Was built by Rajendra's father. Rajendra I's father, who is known as Raja Raja. Raja Raja. Right? Not son. So this is incorrect. Statement 1 is correct. Statement 2 is incorrect. The answer will be C. The answer will be C. Right? Next question. इसमें सिर्फ आपको हायरार्की बतानी है लोएस्ट लेवल से शुरू होके हाईएस्ट लेवल पे, राइट। सो सबसे नीचे आपके सूबेदार होते थे, देन फौजदार, आमीन एंड मुकद्दम. द आंसर विल बी डी, राइट. सूबेदार सबसे नीचे, फौजदार, आमीन एंड मुकद्दम. दैट इज हाउ द हायरार्की यूज्ड टू टेक प्लेस, राइट. देन मैच दी लिस्ट्स विद द करेक्ट ऑप्शंस. ठीक है, आपको ये फेमस पर्सनालिटी रिलेटेड टू देयर रिबेलियन, जिस भी रिवोल्ट या रिबेलियन को इन्होंने लीड किया उसके साथ आपको ये करेक्टली मैच करना है, राइट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, राइट. टीपू शाह वॉज रिलेटेड टू पागलपंथी रिबेलियन. इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, दीज आर important ones. Then Dadu Mian was related to Farzai movement. Chet Singh related to Banaras rebellion, and Titu Mir to Tariqa-e-Muhammadiyya, right. Then again art and culture पे, Manjusha art is present in Bangladesh, it is saying, right. That is true. The main colors of the painting are pink, green, yellow only. That is also the correct statement. Answer to this question will be C, right. Next, now this is quite a difficult question. यहाँ पे ना mentioned भी नहीं है ये क्या चीज़ है. अगर you have never heard about this terms तो ये तो recognize करना ही बहुत difficult हो जाता कि ये places है कि क्या चीज़ है, right. So these are तो फिर भी समझ आ रहा है, these are paintings, मधुबनी है, पताचित्रा है, पिचावाई है, right. These are the basically themes that are used by these paintings. इन paintings में से कौन सी majorly theme use होती है, that is being asked by this question, right. So it's quite on a difficult side, not expected from students to know this exactly, right. So the answer will be B to this question. ठीक है, अगर आपको ये नहीं भी आता था डोंट बी सैड. बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो नहीं मिस होने चाहिए. ये क्वेश्चन किसी को भी मोस्टली नहीं आता होगा, right. But the basic, all the serious candidates will know. That will make a difference of whether you will clear the exam or not, right. Now the next question is leaders who served the president of INC more than once, right, more than once. So this is again a little difficult क्योंकि आप हर सेशन का हमें प्रेसिडेंट नहीं याद होता, but little bit elimination we could use. दादा भाई नौरोजी देखिए, we all know that he has been the INC head multiple times because वो बहुत ही prominent leader Indian freedom struggle के थे, right. So अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गलत ही होगा, राइट. उसके बाद ये भी मल्टीपल टाइम्स थे, ये भी राइट. इनको छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द मेंबर्स वर मल्टीपल टाइम प्रेजेंट ऑन द बोर्ड. यू कैन से आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी. आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, राइट. नाउ again a very easy question, you can do it easily. Maharaja Ranjit Singh came from which missile? Very popular. This is wrong. He belonged to Shukar Chakia missile. Shukar Chakia missile, right.
So this is wrong, and he had these people serving to his service. That is right. Answer will be B. Answer will be B. Right. The next, the following were women, are they are saints? This although we are not sure about this, but we think it should have been Alwar saints, although this reference has also been read. So basically इसका मतलब ये है कि विष्णु फॉलोइंग विमेन सेंट्स को सिलेक्ट करना है हमने. So only this person and this person, they both belong to Shivite sect, Shivite Bhakti, right? So they won't be in the answer. C and E, C and E, C. A will be the answer. All the rest are Vishnu Bhakts, or they are saints or Alwar saints according to us, right? Answer to 78 question will be A, right? Then the question on cotton plantation in the Indian struggle, right? You have to choose the correct statements. American Civil War impacted cotton production. Yes, it did in India. ठीक है, अमेरिका भी उस टाइम पे बहुत बड़ा कॉटन कंट्रीब्यूटर था, स्पेशली टू ब्रिटेन. सो व्हेन अमेरिकन सिविल वॉर वाज गोइंग ऑन, मतलब वो वॉर में एंगेज्ड थे, दे कुड नॉट फोकस मच ऑन प्रोडक्शन. सो उस टाइम पे इंडिया पे इसीलिए यू कैन से इम्पैक्ट हुआ था. इंडिया कुड नॉट गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर. कॉटन प्रोडक्शन डूम्ड इन डेक्कन कंट्री साइड. बूम्ड, सॉरी, नॉट डूम्ड, बॉर्डम. देखिए, जब अमेरिका नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था ब्रिटिश को, तब इंडिया इंक्रीज्ड इट्स कॉटन सप्लाई. ठीक है, तो ये दोनों ही रिलेटेड हैं, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, इन 1862 90% ऑफ कॉटन इम्पोर्ट टू ब्रिटेन केम फ्रॉम इंडिया. ठीक है, बेसिक लॉजिक यही है. अमेरिकन सिविल वॉर मतलब अमेरिका अंदर घर की लड़ाई में बिजी है, तो इनफ कॉटन दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस. सो उसकी जगह पे इंडिया जो है, इंडिया भी ब्रिटिश की कॉलोनी है. सो इंडिया क्या करेगी, अब इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस अपना कॉटन ब्रिटेन को देगी, राइट? सो ऑल दीज 3 ऑप्शंस आर करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग. ए विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? A will be the answer. Now you have to match the kings with the inscriptions that they are related to, right? Inscriptions that they are related to. ठीक है, easy ही है. अहियोल हर्षवर्धना को हराया था पुलकेशिन ने, वो mentioned है इसमें. ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त ने बनाई थी. ठीक है, द आंसर टू 80th क्वेश्चन विल बी ए. द आंसर विल बी ए. ठीक है, दिस इज इजी वन. आपने NCERTs में यू माइट हैव रेड दिस. नथिंग मच टू एक्सप्लेन. देन अगेन, ये वेरियस टाइप ऑफ लैंड और टैक्सेशन सिस्टम्स वर इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ वेरियस किंग्स. सो यू हैव टू चूज विच किंग introduced to which system. Again a factual question, जैसे कि the Shala system was launched by Alauddin Khilji, right? Then Biga-e-Daftari, it was launched by Shah Jahan, right? गज़, इसे आप गज़-ए-सिकंदरी भी सुना होगा आपने, ये सिकंदर लोधी ने लॉन्च किया था. एंड बिस्वा बचा है राजा तोदरमल. द आंसर विल बी डी टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, the answer will be D. Again an easy question. ठीक है, now which of the following statements are correct about Bharatmala? This is Bharatmala परियोजना. ठीक है, so it envisages replacement of level crossing. This is wrong. ठीक है, level crossing जो सड़कों के ऊपर जो आपकी रेलवे लाइंस होती हैं, उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं. सो गवर्नमेंट ने सोचा था कि इन रेलवे इनको बाईपास किया जाए, इनके ऊपर पुल्स बना दिए जाएं लोग, ताकि एक्सीडेंट्स कम हो सकें. तो वो प्रोजेक्ट जो है वो सेतु भारतम है. सेतु भारतम.
not Bharatmala Pariyojana. So 1 will be wrong. The answer will be B. All the other options are correct. Right? All the other options are correct. उसके बाद डैम्स इजी है. हीराकुंड डैम है महानदी पे, ठीक है. और उड़ीसा में यू कैन से गांधी सागर एमपी में है, चंबल रिवर पे पाया जाता है, मैतूर ऑन कावेरी एंड सरदार सरोवर ऑन नर्मदा. राइट. सो द आंसर टू 83rd क्वेश्चन will be D. Answer to 83 question will be D. Now, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, again very easy, right? It's related to converging all the schemes related to investment on irrigation in agriculture. ठीक है, वो सब इसके अंडर आएंगी. ठीक है. सो वाटर की यूज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये फोकस्ड है, और वाटर को कंजर्व किया जाए, उसको वेस्ट ना किया जाएगा, वो सब इस पे फोकस किया जाएगा. ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में इरिगेशन की फैसिलिटी पहुंचाई जाए. आज भी इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून. दे आर नॉट गेटिंग एग्जैक्ट इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना भी इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है. So the answer will be D. All these statements are correct. Right? Now, again a very easy question. आपको इन नाम these states have to be matched with these titles. Right? So God's own country, it's Kerala only. Kerala tourism का title भी है, if you have ever heard about it. It's very easy. Kerala God's own country. ठीक है. Adobe of clouds. Clouds means मेघ, हिंदी में मेघ, बादल. Right? मेघालय का संस्कृत ट्रांसलेशन है ये. ठीक है. Abode of clouds. मेघालय का मतलब है abode of clouds. Right? So this is correct. उसके बाद लैंड ऑफ रेड रिवर्स एंड ब्लू हिल्स, इट्स असम. राइट. लैंड ऑफ गॉड्स, उत्तराखंड. ठीक है जी. सो द आंसर फॉर 85 विल बी ए. नाउ द आंसर फॉर 86th क्वेश्चन विल बी डी. द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स इज कॉल्ड जर्नल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, and the journal circulation sets in motion the ocean water. ठीक है. दोनों statements correct हैं, but this is not the explanation of this. Right? So this is again correct. D is the answer. Now 87. Indian plate includes the peninsular and the Australian continental portions. That is correct. The subduction zone along Himalayas. ठीक है. इंडियन प्लेट पता है ना, थोड़ा उसके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पे हिमालयाज यू कैन से फॉर्म्स द सदर्न बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिनेंट कन्वर्जन. तो ये सदर्न बाउंड्री नहीं है, ये नदरन बाउंड्री आएगी. नदरन प्लेट बाउंड्री है. दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट. ठीक है. ये सारी एक्सटेंड करती है म्यांमार तक. ये सारा म्यांमार वाला एरिया इज़ इंक्लूडेड इन इंडियन प्लेट, जावा ट्रेंच तक, एंड किरथार माउंटेन भी. राइट. सो 2 is incorrect. The answer to this question will be C. The answer to this question will be C. Right? Right? So the next question again related to your current affairs टॉपिक, करंट अफेयर्स टॉपिक. अगर आपने ये सारे अवार्ड्स कभी भी लिटिल बिट यू हैव स्टडीड अबाउट देम, देन इट इज़ ईजी. ठीक है. सो द आंसर टू दिस विल बी ए. द आंसर टू दिस विल बी ए. द्रोणाचार्य आपको पता ही है, महाभारत में पांडवों के गुरु थे, गुरु और टीचर. तो मतलब गुरु या टीचर को ये अवार्ड दिया जाएगा, मतलब कोचेस को. 3 विल बी द ऑप्शन. राइट. सो खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये दिया जाता है आपका कंट्रीब्यूशन. ठीक है. खेल में स्पोर्ट्स पर्सन्स को इनकरेज करने के लिए. राइट. सो
it will be related to this, right? And then your Dhyan Chand award is given to the sports persons who have contributed to sports, right? Answer will be A. Answer will be A to this question, right? Now 89, Haryana is the first state to achieve 100% rural electrification. That is true, right? Haryana is the sole holder of country's rock salt resources. Sole holder Haryana nahi hai, it will be Himachal Pradesh, right? These two are correct, 2 will be wrong, the answer will be C, right? मेरा पानी मेरा विरासत स्कीम हरियाणा की फार्मर्स पे फोकस करता है. ऑब्वियसली पानी से रिलेटेड एग्रीकल्चर इरिगेशन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू. नाउ इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन ईजी है, अदरवाइज डिफ़िकल्ट है. रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच RBI lends to banks, commercial banks, right? अब when RBI increases repo rate, that means the cost of borrowing funds for the banks increases. That means banks will borrow less, right? That means there will be less liquidity in the market, right? Less liquidity in the market, ठीक है? So दिस इज़ वॉट रेपो रेट इज़. अब इसके बेसिस पे ये आप देखेंगे. सो रेपो रेट आर इंक्रीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है? इन्फ्लेशन का मतलब ही ये है कि पैसा बहुत है मार्केट से, उसको सक करना है. सो येस, रेपो रेट विल बी इंक्रीज्ड ताकि लिक्विडिटी को डिक्रीज किया जा सके मार्केट में. सो दिस इज़ राइट. विद इंक्रीज इन रेपो रेट्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी इंक्रीजेज, यही हम कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीजेज. With reduction in repo rate, industry gets loans at higher rates, ठीक है? अब देखिए कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इंडस्ट्री विल गेट लोन्स एट राइट लोअर रेट्स फ्रॉम द लेंडर. ऐसा नहीं होगा, right? To decrease the money supply, the RBI hikes up repo rates to encourage banks to not to encourage banks but to discourage. जब repo rate increase हो गई, ठीक है, cost of borrowing increase हो गई, that means banks will be discouraged. 4 will be wrong, right? Answer will be A, ठीक है? Cost of borrowing will increase, right? Now हरियाणा के बजट पे क्वेश्चन आया है. लो अगर आपने ये बजट ही नहीं पढ़ा है तो ये सॉल्व करना डिफ़िकल्ट होगा. फैक्चुअल क्वेश्चन है. आंसर विल बी डी, राइट? देन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, अगेन अ वेरी फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, तो इनके बारे में आपको पता ही होना चाहिए. प्रोवाइड्स कवर अप टू नॉट 3 lakhs 5 lakhs पर फैमिली पर ईयर, राइट? फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी, राइट? कैशलेस पेपरलेस एक्सेस मिलता है. प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कवर्ड रहती हैं. बेनिफिट्स आर नॉट पोर्टेबल, नोट सो दे आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, राइट? सो 1 and 4 आर रॉन्ग. सिलेक्ट क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट्स 2 and 3. बी विल बी दी आंसर. बी विल बी दी आंसर, राइट? नेक्स्ट इज ट्रिब्यूटरीज, राइट? ट्रिब्यूटरीज पे भी हर साल एक क्वेश्चन आना स्पेशली यूपीएससी में लाजमी है. सो ट्रिब्यूटरीज आपको याद होनी चाहिए. दिस इज़ राइट. कृष्णा की तुंगभद्रा, गताप्रभा, मालप्रभा, दिस इज़ राइट. केन, बेतवा, चंबल, यमुना की, राइट? कावेरी, कंबिनिंग, भीमा, हेमावती. भीमा इज ऑफ कृष्णा, नॉट कावेरी. सो डी विल बी रॉन्ग.
Gomti Kosi Gandak of Ganga. This is also very right. So the answer will be A, B and C. A. सिर्फ कावेरी की गलत लिखी हुई है यहाँ पे, बाकी सब सही लिखा गया है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है रिवर्स को. सो वी ऑल नो गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, तापी, इस तरीके से है. सी द ऑप्शन दैट मैचेस. द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी वी. ठीक है, ये वाला. अदरवाइज ऑल दी अदर्स आर रॉन्ग. गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, ये हमें पता ही है. सो ये ऑप्शंस तो आप सीधा काट सकते थे, राइट. उसके बाद द आंसर विल बी बी. देन हिस्ट्री बेस्ड क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्वेश्चन. उषा मेहता ने अपना सीक्रेट अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था. दिस इज करेक्ट. उसके बाद के.टी. भाष्यम, independent local governments. Chittu Pandey, labor unrest. So these two are interchanged because Chittu Pandey, he led the local government, ठीक है, and K.T. Bhasham, he led the labor unrest. ठीक है. So B and C are incorrect. Which men are matched properly. So A and D are right. That is, D is the answer. These two are wrong, right. So the answer will be D. Now again we have to match these particulars, right. So Moti Masjid, we all know that it is located in Agra, right. Jahangir's mausoleum, it's present in Lahore. Extensive use of calligraphy was done on the peacock throne, right. And the first project to be commissioned by Shah Jahan was Taj Mahal. ठीक है. So it will be related to Taj Mahal. So the answer for 96th question will be A, right. Then you have to match Sufi saints. ठीक है. So हम सबको पता है that we have Ajmer Dargah, which is related to Muanuddin Chishti, right. So this is a very important dargah, अगर आपको ये पता है, right. So B you could have matched with this. Then Bahaduddin Zakaria was the founder of Surawadiya order, right. So it will be related to this. Then this person is related to Gulbarga, right. Answer to this question will be A. Answer to this question will be A, right. Now एक बड़ा सा क्वेश्चन आएगा आपको डराने के लिए, right. So this entire description has been given to you regarding one of the Indus Valley civilization site. You have to recognize which site is it referring to, right. So all these characteristics are related to Rakhi Gadi of Haryana, right. So D will be the answer to this question. ठीक है जी. 99 about हर्षवर्धना, right. ये मैंने पहले भी बताया. हर्षवर्धना was defeated by Pulakesin. यही हियोल इंस्क्रिप्शन में mentioned है. पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया. This option is right. He belonged to Mukhari dynasty. That is right. Harsha himself wrote 3 plays, Ratnavali, Priyadarshika. This is not wrong. I mean not Naga Manjari. He wrote Nagnanda, and yes, these were the 3 writers present in his court. Answer will be ABC, that is A, right. And the last question says, arrange the following temple constructions in chronological order. Again, अगर आपको पता है कि ये टेम्पल्स किस किस एम्पायर ने बनाए थे, यू कुड हैव अरेंज्ड दिस वेरी इजीली. बृहदेश्वरा अभी हमने डिस्कस किया, चोलास ने बनाया था. ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट पत्तका चालुक्यास द्वारा बनाए गए थे.
Vithala temple at Hampi by Vijayanagar Empire, and then Madurai Meenakshi temple by the Nayaks. राइट सो अगर आप इनको अरेंज करना चाहें, इफ़ यू नो द पीरियड्स, सबसे पहले इनमें से चालुक्याज वर देयर, राइट, देन चोलास एंड विजयनगर एम्पायर 17 तक था, राइट, और उसके बाद ही नायकाज भी आए थे. ठीक है, सो द आंसर विल बी सी. ठीक है, एग्जैक्ट ईयर्स किसी को भी नहीं मालूम होते, जस्ट ट्राई टू इंटर रिलेट कि आपने इनको कहाँ कहाँ पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, सो एग्जैक्ट ईयर्स यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर, बट एटलीस्ट रिमेंबर द क्रोनोलॉजी ऑफ वेरियस एम्पायर्स दैट वी सॉ इन हिस्ट्री. ठीक है, सो उससे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. राइट, सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. होप इट हेल्प्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.